Good morning students. Today we are going to discuss the circuit containing inductance and resistance in series. You can see this is a circuit. Here the AC voltage V is equal to V naught sine omega t is applied across a inductor of inductance L and a resistance of resistance R. When we apply the voltage V is equal to V naught sin omega t, तो उस केस में the voltage across the inductor is VL and the voltage across the resistor is VR. Now we have studied earlier that the voltage of the resistor is in phase and the phase difference of the voltage of the inductor is 90 degree. So here is the phase diagram. Here we have taken the current. Here is the voltage. Phi is the phase angle and this is 90 degree, and OD is the resultant vector of the resistor and the inductor circuit. Now when we have applied the voltage across the inductor VL is equal to I into XL. What is XL? XL is the inductive reactance. Similarly, the voltage across the resistor is VR is equal to IR, where R is the resistance of the resistor. Now we know that the resultant is represented by OD. Formula for the resultant, here we have two vectors, OA and OB, and OD is the resultant. What is the formula for the resultant? Formula for the resultant will be OD is equal to under root of OA square plus OB square plus 2 OA OB cos theta. यहाँ theta क्या है 90 degree and cos 90 is 0. So we have OD square is equal to OA square plus OB square. अब OD क्या है हमारा resultant, that is the V. We have V square is equal to OA square हमारा क्या है VR square and OB square हमारा क्या है VL square. So we have V square is equal to I square R square plus I square XL square. इसमें जब हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे we will have I is equal to V upon under root R square plus XL square. अगर हम इस रिलेशन को कंपेयर करेंगे with Ohm's law, according to Ohm's law, the value of current is I is equal to V upon R. So we find that under root of R square plus XL square have same dimensions as that of resistance, and in this case it is known as impedance and it is represented by capital Z. Capital Z is equal to under root of R square plus XL square. Now we know that the value of XL, that is the inductive reactance, is omega into L, where omega is the angular frequency and capital L is the inductance of the inductor. So we have the value of Z as under root of R square plus omega L whole square. Now we have tan phi. Tan phi will be equal to, from here you can find that tan phi. What is the value of tan? Tan होता है perpendicular upon base. Here perpendicular is AD and base is OA. So हमारी tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी? AD upon OA. AD हमारा क्या है? VL upon VR, और VL की वैल्यू और we will get omega L upon R, क्योंकि VL की वैल्यू हमारे पास आएगी I into omega L और नीचे आएगा IR. I and I will cancel out. So value of tan phi will be omega L upon R. So when we have a circuit which contains two elements, earlier we have studied all the circuits containing one element. Now we are studying the circuits containing two elements. So first circuit containing two elements was of inductor and resistance in series. In this, the phase difference between the voltage of the resistor and the inductor is 90 degree because the VR is in phase with I and the phase difference between I and voltage of the inductor is that of 90 degree. So the total phase difference between the voltage of the resistor and the voltage of the inductor is also 90 degree. So we have done this. In this the resultant
जो वोल्टेज है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, और जो हमारा tan phi है इट इज ओमेगा एल अपॉन आर. सो next we will do, the next article we are going to do is the circuit containing capacitance and resistance in series. फर्स्ट हमने किया जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में था, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टेंस इन सीरीज. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अक्रॉस अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर. जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट इज VC, एंड जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर है दैट इज VR. सो VC इज इक्वल टू I इंटू XC, क्योंकि XC क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर which is equivalent to the resistance, and VR is equal to I into R. This is the phase diagram. Here we have VR, that is the voltage of the resistor is in phase with I, and the phase difference between I and the voltage of the capacitor is 90 degree. So the total phase difference between the current and the voltage is also the voltage of the resistor and the voltage of the capacitor is also 90 degree. Here OD will represent the resultant. We will find the value of the resultant and the value of tan phi in the same way we have done for the inductance and resistance circuit. Now OD represents the resultant. So the resultant will be equal to V square इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. और ये कहाँ से आया, हमें पता है रिजल्टेंट V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 VR VC cos 90. वैल्यू ऑफ cos 90 is 0, so we will have V is equal to under root VR square plus VC square, and when we will square on both sides we will get V square is equal to VR square plus VC square. अब VR की वैल्यू क्या है, VR की वैल्यू होती है IR, सो वी हैव I स्क्वायर R स्क्वायर, एंड VC की वैल्यू है I इंटू XC. XC क्या है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो वी हैव I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, वेयर XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. सो हमारी I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर. एंड जब हम इसे कंपेयर करेंगे विद ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R. सो द डिनोमिनेटर हियर is representing the resistance, and in this case it is called as impedance, and it is represented by capital Z. So capital Z is equal to under root of R square plus 1 upon omega C whole square. When we will find, जो हमने पीछे करा था जब tan phi की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, तो tan phi की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, tan phi is equal to R अपॉन, जब हमने tan phi की वैल्यू जब हमने tan phi की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, तो पिछले आर्टिकल में हमारे पास tan phi की वैल्यू आई थी, tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R, और इस केस में हमारे पास tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan phi इज इक्वल टू XC अपॉन R. सो दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है, जो हमारा रिजल्टेंट है उसमें जो रिजल्टेंट है इट इज द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर एंड द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, and in this case the resultant is the under root of square of sum